हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अल्पना गोखरू, एसोसिएट प्रोफेसर फिज़िक्स एसपीसी जीसीए गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम सेकंड सेमेस्टर का क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट स्टेशनरी परटर्बेशन थ्योरी नॉन डीजेनरेट केस के बारे में बात करेंगे। Stationary perturbation theory, non-degenerate case. The stationary perturbation theory is concerned with finding the change in the energy levels and eigenfunctions of a system when small disturbance is applied. In such cases, Hamiltonian is broken up into two parts, one of which is large and one represents a system for which the Schrodinger equation can be solved exactly, while the other part is small and can be treated as perturbation term. If the potential energy is distributed by the influence of additional factors, the energy levels are shifted, and for a weak perturbation, the amount of shift can be estimated if the original unperturbed states are known. Consider a physical system subjected to perturbation which shifts the energy level slightly. The Hamiltonian H for this system in the Schrodinger equation can be written as the sum of the two parts. One of these parts H0 corresponds to unperturbed system and other part H dash corresponds to perturbation effect. The Schrodinger wave equation can be written as H psi is equal to E psi. Here H is the Hamiltonian operator, and this Hamiltonian operator can be further written as minus h cross by 2 sigma I 1 upon ml del I square plus V. Let E be the eigenvalue and psi is the eigenfunction of the operator. H is the sum of the two terms H0 and H1. H operator is equal to H0 plus H1. Let psi k0 and E k0 be the particular orthogonal eigenfunction and eigenvalue of the unperturbed Hamiltonian H0, that is H0 psi k0 is equal to E k0 psi k0. If we consider non-degenerate system, that is the system for which there is one eigenfunction corresponding to each eigenvalue in the stationary system, the Hamiltonian H does not depend upon the time, and if it is possible to expand H in terms of the some parameter lambda, yielding the expression H is equal to H0 plus lambda H dash plus lambda square H double dash and so on, equation number 4, in which lambda can be chosen in such a way that the equation 1 for lambda equal to 0 reduces to the form H0 psi 0 is equal to E0 psi 0. This equation is said to be the wave equation of unperturbed system, while the term lambda h dash plus lambda square h double dash plus another terms can be called as perturbation terms. The unperturbed equation 5 has solution psi 0, 0, 0 plus psi 1 0, psi 2 0 and psi k 0 called the unperturbed eigenfunction, and corresponding eigenvalues are E0 0, E1 0, E2 0 and Ek 0. The function psi k 0 dash for a complete orthogonal set, that is they specify the condition that integration psi ij0 psi I0 delta t is equal to delta ij, where delta I is equal to 0 for I is not equal to j, and this is equal to 1 when I is equal to j. Delta ij is known as Kronecker delta symbols. Now let us consider the effect of perturbation. We can expand the energy E and the wave function psi for the perturbed system in terms of lambda. So we can write psi k is equal to psi k 0 plus lambda psi k dash plus lambda square psi k double dash and so on. Similarly, Ek is equal to Ek 0 plus lambda k dash plus lambda square Ek double dash, given by equation 8. If the perturbation is small, then the terms of the series 7 and 8 will become rapidly smaller, that is, the series will be convergent. Now, substituting equation 4, 7
and 8 in equation 1 we get h0 plus lambda h dash plus lambda square h double dash and so on. In bracket psi k0 plus lambda psi k dash plus lambda square psi k dash is equal to e k0 plus lambda e k dash and so on plus psi k0 plus lambda psi k dash and so on. On collecting the coefficients of like powers of lambda, we get h0 psi k0 minus e k0 psi k0 plus h0 psi k dash plus h dash psi k0 minus e k0 psi k dash minus e k dash psi k0 lambda plus h0 psi k double dash plus h dash psi k dash plus h double dash psi k0 minus e k psi k double dash minus e k dash psi k dash माइनस ई के डबल डैश psi k ज़ीरो लैम्डा ज़ीरो स्क्वायर. यहाँ की लैम्डा की पावर्स की सारी सेम जो लैम्डा पावर्स थी उन सब टर्म्स को हमने एक साथ रख लिया है. इन दिस सीरीज द प्रॉपरली if this series is properly convergent, that is equal to 0 for all possible value of lambda, then coefficients of various powers of lambda must vanish separately. These equations will have successively higher orders of the perturbation. The coefficient of, अगर lambda 0 को 0 करते हैं सबसे पहले तो इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास h0 माइनस ई के ज़ीरो साई के ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो. जो फर्स्ट ब्रैकेट को ज़ीरो किया, दिस इज इक्वेशन 10a. सिमिलरली द कोफिशिएंट्स ऑफ लैम्डा गिव्स इक्वेशंस h0 साई के डैश प्लस h डैश साई के ज़ीरो माइनस ई के ज़ीरो साई के ज़ीरो माइनस ई के डैश साई के ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो. दिस इज इक्वेशन 10b. और h0 माइनस ई के ज़ीरो साई के डैश प्लस h डैश माइनस ई के डैश साई के ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो. द कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा स्क्वायर गिव्स द इक्वेशन h0 साई के डबल डैश प्लस h डैश साई के डैश प्लस h डबल डैश साई के ज़ीरो माइनस ई के ज़ीरो एंड साई के डैश माइनस ई के डैश साई के डैश माइनस ई के डबल डैश माइनस ई के साई के ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो. तो ये सारी हमारे पास कंडीशंस आ गई. जबकि साई के जो कोफिशिएंट्स अगर ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो इन सबको हमने ज़ीरो कर दिया. अब हम फर्स्ट ऑर्डर और हायर ऑर्डर्स में एनर्जी की वैल्यूज़ को डिस्कस करेंगे.